हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल प्रेरणा ब्यूटिशियन। माई सेल्फ प्रेरणा माहेश्वरी। मैं आप लोगों को की डिमांड पर थ्रेडिंग का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिसको आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं किस तरीके से थ्रेडिंग मेरे को बनानी है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हैं कि इनकी जो आईब्रोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा हल्की हैं, तो थिन आईब्रो में किस तरीके से बनानी है आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें थ्रेडिंग करते टाइम आपको हल्का सा पाउडर लगाना है। उसके बाद आपको अच्छे से क्लाइंट को स्टिच करने को बोलना है। ठीक है, अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा हो तो आप हल्का सा पाउडर ले लें। उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरह से शेप देंगे आप। ठीक है, अगर आपके एक्स्ट्रा हेयर हैं आगे की साइड तो आप सीजर से कट कर लें। और ऊपर की साइड से हमें जो शेप देनी होती है, बहुत ही कम ही हेयर निकालने होते हैं। हमें जो शेप देनी होती है वो नीचे की साइड से देनी होती है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे मैं शेप दे रही हूँ। लेकिन क्लाइंट को आप बोल दें कि अच्छे से स्टिच कर लें, वरना कट लग सकता है थ्रेडिंग में। ठीक है, और अगर बिगनर्स हैं, अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो आप एकदम से वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। थ्रेडिंग बनाने की आप एक एक बाल करके ही निकालें। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है थ्रेडिंग करते टाइम कि आपको बहुत ही हल्के हैंड से धागा चलाना है और एकदम से जमा करके प्रेस करना है। उसके अलावा आपके जो आई बॉल पे जो भी एक्स्ट्रा हेयर हो, वहाँ पे भी आपको हल्के हैंड से सारे हेयर को रिमूव करना है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से। अगर आप ऐसी वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई है। अगर आपके पास टेलीकम पाउडर ना हो तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। मॉइस्चराइज़र लगा के भी आप थ्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने आपको लेकर आई हूँ, बहुत ही हल्की आईब्रोज़ को किस तरीके से बनाते हैं, कैसी शेप देते हैं। तो इनकी बहुत ही हल्की आईब्रोज़ थी, फिर भी मैंने बहुत अच्छी इनकी आईब्रो की शेप निकाली है, वो आप लास्ट में देखेंगे ज़रूर। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें वीडियो। और आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो से क्या सीखने को मिलता है और कैसी लगती है मेरी वीडियोस। हमारी दोनों आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं मिड के हेयर निकालूंगी। मिड के हेयर ज़रूर निकालना, कस्टमर के आप निकालना ना भूलें। और आप बताएं कमेंट में कि आपको आईब्रो की शेप कैसी लगी। कस्टमर को तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को पसंद आई या नहीं आई ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। Over the next few minutes, I'm going to show you why eyebrow threading may be the perfect solution for sculpted eyebrows. If you've been looking at eyebrow threading as a solution to messy waxing or painful plucking, you may have a lot of questions, such as why is eyebrow threading better than waxing? Does eyebrow threading hurt? How long does the threading work for? We have years of experience helping people just like you get the perfect look through eyebrow threading. Even if you have been disappointed by the results of waxing and plucking, we can help. Give us a call today to set up a free consultation so we can help you get the beautiful eyebrows you deserve. Solution to messy waxing or painful plucking, you may have a lot of questions, such as why is eyebrow threading better than waxing? Does eyebrow threading hurt? How long does the threading work for? We have years of experience helping people just like you get the perfect look through eyebrow threading. Even if you have been disappointed by the results of waxing and plucking, we can help. Give us a call today to set up a free consultation so we can help you get the beautiful eyebrows you deserve.
Over the next few minutes, I'm going to show you why eyebrow threading may be the perfect solution for sculpted eyebrows. If you've been looking at eyebrow threading as a solution to messy waxing or painful plucking, you may have a lot of questions, such as why is eyebrow threading better than waxing? Does eyebrow threading hurt? How long does the threading work for? We have years of experience helping people just like you get the perfect look through eyebrow threading. Even if you have been disappointed by the results of waxing and plucking, we can help. Give us a call today to set up a free consultation so we can help you get the beautiful eyebrows you deserve. Over the next few minutes, I'm going to show you why eyebrow threading may be the perfect solution for sculpted eyebrows. If you've been looking at eyebrow threading as a solution to messy waxing or painful plucking, you may have a lot of questions, such as why is eyebrow threading better than waxing? Does eyebrow threading hurt? How long does the threading work for? We have years of experience helping people just like you get the perfect look through eyebrow threading. Even if you have been disappointed by the results of waxing and plucking, we can help. Give us a call today to set up a free consultation so we can help you get the beautiful eyebrows you deserve.